Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mamta Nikam and I am here with a new topic today, that is linear and orthogonal transformations. Matrices की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं what is linear transformation and what is orthogonal transformations. So let's proceed with the topic. सो बेसिकली व्हाट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले हम वीडियो में हमने ऑलरेडी मैट्रिसेस की सीरीज की बात करी। तो इस सीरीज में हमने पिछले वीडियो में व्हाट इज अ वेक्टर हमने देखा है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर राइट इन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे हेल्प करती है, हाउ डू वी डिसाइड वेदर इट इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, राइट। सो इसका ही यूज करके ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें हेल्प करेगा टू find whether the matrix is helpful in linear transformations, whether it is orthogonal or not. Okay, so what is linear transformation, or when do we say a transformation is linear? So, given a transformation y is equal to ax, such transformation is said to be a linear transformation. Now we hear what is y equal to ax. Y is a matrix y1 y2 yn. A is a matrix n cross n matrix and x is another matrix and unknown matrix. तो यहाँ पे y and x क्या है, unknown matrix है। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहा जाता है, जब एक मैट्रिक्स x को एक n cross n matrix A, or you can say a matrix of unknowns, is transformed to another unknown matrix Y with the help of a matrix A, then such transformation is said to be a linear transformation. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक X मैट्रिक्स है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है Y में with the help of a matrix A, then such transformation is said to be a linear transformation. So in general, its representation is going to be y1 is equal to a11 x1 a12 x2 and so on up to an1 and xn. मतलब क्या, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिख सकते हैं। हाउ इन द you know the matrix representation, y is a matrix y1 y2 yn unknown matrices है, ओके। और x भी एक unknown matrix है x1 x2 xn। xn को क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है y1 y2 yn में। कैसे, जिस दिस मैट्रिक्स A इज गिवन n क्रॉस n मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसके हेल्प से ये हो रहा है। तो इस मैट्रिक्स को हम ऑब्वियसली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक क्या है, बेसिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग अ मैट्रिक्स to another matrix, or you can say transforming a vector to another vector with the help of a matrix A. Okay, such transformation is said to be linear transformation. Okay, so there are some important points which we need to be discussed here. Given a matrix A of a transformation, then determinant of A is known as modulus of the transformation. Means जो मैट्रिक्स हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, वो मैट्रिक्स अगर दिया गया है तो अगर उसका अगर डिटर्मिनेंट लिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट को कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स व्हाट, हियर x is transformed to y with the help of A. So this is the matrix which is transforming these vectors. So and if you take determinant of this matrix, इस वैल्यू को इसको कहा जाता है मॉड्यूलस। ओके, नेक्स्ट इज if determinant of A is equal to 0, then the transformation is said to be singular and the linear transformation is called as singular transformation. Obviously we know determinant of A अगर 0 होता है तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ऑब्वियसली सिंगुलर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, a non-singular linear transformation carries linearly independent vectors into linearly independent vectors. Okay, अगर जो भी मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो क्या है, डिपेंड करता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर। तो जब एक नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये जो वेक्टर होता है x हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देख लिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट,
जब एक लीनियर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से ट्रांसफॉर्म टू लीनियरली इंडिपेंडेंट इटसेल्फ, whereas linearly dependent is transformed to linearly dependent itself. And the last but very important point, that is every square matrix defines a linear transformation. Given whatever matrix A B, अगर वो एक square matrix होगा तो वो linear transformation define कर सकता है. ठीक है. So this was linear. What is linear transformation in short? We have discussed a few points. Let us discuss examples on it. So now, what is the question given here? The question given here is, given a transformation y equals to, now matrix दिया है, say this is your matrix A, okay, into x1 x2 x3, find the coordinates x1 x2 x3 corresponding to 3, 0, 8 in y. So basically हमें y मैट्रिक्स दिया है, कोऑर्डिनेट्स दिए है, y वेक्टर दिया गया है और इसे यूज करके हमें x वेक्टर कहना है. So हमें क्या पता है? हमें पता है y is equal to ax, means what? X is transformed to vector y with the help of a here, right? But now here in this question हमें वैल्यूज किसकी दी है? y की दी गई है, a दिया गया है और हमें x फाइंड आउट करना है. तो obviously since ax is equal to y, we can express x is equal to a inverse into y, right? If you multiply both sides by a inverse, हमें ये relation मिल जाएगा. देखो, so suppose we multiply both sides by a inverse, के क्या हो जाएगा? ये होगा a inverse into y equals to a inverse into a into x. A inverse into a is nothing but identity. Identity into any matrix is going to be the same matrix. So a inverse into y is equal to x. So this relation will help us to find the coordinates of x1, x2, x3. Now using this relation, हमें इस relation में value कौन सी चाहिए? y हमारे पास है, हमें चाहिए a inverse. So we have a definition. We know what is a inverse. A inverse क्या होता है? A inverse होता है 1 upon determinant of a into adjoint of a. So we need to know first what is a determinant, what is adjoint, and then we will get a inverse. So adjoint क्या, determinant क्या होगा? So basically first we will express a here. Here what is a? A is this given matrix 1 1 minus 2 2 minus 1 1 3 1 minus 1, right? And now what will be adjoint, determinant. First हम check करेंगे determinant क्या होगा? 1 times minus 1 minus 1, this is going to be 1 minus 1 minus 1 times minus 2 minus 3 minus 2 times minus 2 minus 3. Am I writing it correct? So this is going to be 2 plus 3. So what this will be? This will be 0 minus 3, 2 minus 3 is minus 5. ये हो जाएगा 5. This is going to be 3 plus 2, 5 into 2 minus 10. So determinant होगा minus 5, that is not equal to 0. So obviously it is a non-singular matrix and इसके corresponding transformation क्या होगा? Non-singular होगा. ठीक है? Now we need to know what is adjoint. Adjoint क्या होता है? Adjoint होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है माइनस को यूज करके विथ रिस्पेक्ट टू साइंस. ये A11 पोजीशन है तो ये पॉजिटिव साइन होगी. A12 पोजीशन पे क्या होगा? निगेटिव साइन. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आता है. ये इजी जाता है हमारे माइनस फाइंड आउट करने के. नाउ डायरेक्टली फाइंड द माइनस. 1 का माइनस होगा 1 minus 1 तो 0. देन नेक्स्ट 1 मतलब निगलेक्टिंग करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम. ये हो जाएगा -2 -3 दैट इज -5 तो ये होगा +5. नेक्स्ट वन इज 2. 2 का माइनर होगा 2 minus +3 दैट इज 5. नेक्स्ट इस 2 का होगा -1 + 2 वो दैट इज 1. यहाँ पे साइन क्या है? ये निगेटिव है तो ये हो जाएगा -1, राइट. सिमिलरली फर्दर ये मिडिल वन का क्या होगा? -1 + 6 सो दिस इज गोइंग टू बी 5, राइट. नेक्स्ट ये क्या होगा? 1 का 1
minus 3 that is minus 4, minus minus plus होगा तो ये होगा plus 4. Then 3 का क्या होगा, 3 का होगा 3 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ तो ये होगा 1, माइनस माइनस प्लस है बट माइनस साइन होगा तो 1, माइनस 2 होगा, ये होगा माइनस 1. करेक्ट. नेक्स्ट 1 का क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम छोड़ दो, ये होगा 1, माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 प्लस 4 दैट इज 5, दैट इज माइनस साइन तो ये माइनस. नेक्स्ट कॉलम, ये रो तो निगलेक्ट कर लिया है, ये कॉलम निगलेक्ट होगा तो माइनस 1, माइनस 2 दैट इज माइनस 3 हो जाएगा. करेक्ट. सो therefore adjoint मैट्रिक्स क्या होगा, adjoint ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, तो ट्रांसपोज होगा 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 5 माइनस 5, 5 4 माइनस 3. And therefore now we know what is adjoint. Therefore A inverse क्या होगा, 1 upon minus 5 into 0 minus 1 minus 1, 5 5 minus 5, 5 4 minus 3. Correct. A inverse तो मिल गया हमें. Now we know what is A inverse. Now we using the star equation A inverse into y करोगे तो हमें corresponding x के coordinates मिल जाएंगे. So here x is equals to A inverse y, that is x1 x2 x3 is equals to A inverse. हमारे पास क्या है, ये जो बाहर 1 upon minus 5 है वो वैसे ही रखते हैं, 0 minus 1 minus 1, 5 5 minus 5, 5 4 minus 3 into the vector y 3 0 8. So now when we will multiply this on the right hand side, 1 upon 5 minus 1 upon 5 as it is, ये क्या हो जाएगा, 0 0 and minus 8, right. Then ये हो जाएगा 15 0 and minus 40, so 15 minus 40 is going to be minus 25, and then 15 0 and minus 24, so 15 minus 24 is going to be minus 9. So therefore what will be x1 x2 x3, ये मल्टीप्लाई करोगे 1 minus 1 upon 5 तो ये होगा 8 by 5, 5 9 by 5. So this is the corresponding vectors x1 x2 x. You can also write 8 by 5 comma 5 comma 9 by 5 is the corresponding vectors in x1 x2 x3. Okay, so this is about transformations, linear transformation. Okay, next we will discuss what is orthogonal transformation. So what is an orthogonal transformation? Now given a transformation, if it is linear, then it is said to be orthogonal if it transforms x1 square plus y1 x2 square plus up to xn square into y1 square plus y2 square plus y1 square. So basically एक orthogonal transformation कब बनता है, जब वो transformation पहले से linear है तो भी बनता है. So remember this point, if it is orthogonal transformation is prepare or done, or we obtain an orthogonal transformation only when it is a linear transformation. The condition is it should be linear. Okay, so given a linear transformation y equal to ax, where y is y1 y2 yn, a is a11 a1 and so on, and x is x1 x2 xn, then it is said to be orthogonal if this relation is proved. What is this relation? X1 square plus x2 square and xn square is equal transformed to y1 square plus y2 square and y1 up to yn square. Okay, and this matrix A basically, which is transforming this linear transformation into orthogonal transformation, which is the matrix with which we are which is helping us to find an orthogonal transformation. That matrix is said to be an orthogonal matrix. Okay, so what is this matrix said here to be? It is said to be an orthogonal matrix.
Note down some important points. Given a matrix, if it is a square given a square matrix A, it is said to be orthogonal if A into N transpose, or you can say A transpose into A is equal to identity. And if it is orthogonal, then A inverse is equal to A transpose. This relation is proved. Okay, these are the points which is helpful for MCQ type questions. Okay, so let us discuss an example based on orthogonal transformation. ओके, क्या कहता है और क्वेश्चन? गिवन द क्वेश्चन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है हमें और बताया गया है कि ये ऑर्थोगोनल है. ओके, एंड हमें फाइंड आउट करनी है ए बी सी की. ठीक है, सो ये हमें कंडीशन बताया गया है क्वेश्चन में कि ये ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है. तो ऑलरेडी ऑर्थोगोनल है तो हमने डिस्कस किया, इफ मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल then A into A transpose is equals to identity. ये रिलेशन प्रूफ होता है. सो हम क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पे, so that we will be able to find A, B and C. ओके, सो गिवन मैट्रिक्स A हमारे पास है A into A transpose equal to identity. A मैट्रिक्स है 1/3, 2/3, A 2/3, 1/3, B 2/3, minus 2/3 and C. दिस इज मैट्रिक्स ए. इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 1/3, minus 2/3, A, B and C equals to identity matrix. Since this is a 3x3 matrix, 3x3 matrix का ही identity हम कंसिडर करेंगे. ओके, now what this we will on the left hand side, ये जो दो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई करके इवेल्युएट करेंगे एंड then we will equate it with the matrix on right hand side. so मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे. so first multiplication, how do we multiply? multiplying row and column, right? so ये 1/3 into 1/3 क्या होगा, 1/9 plus 2/3 into 2/3 is going to be 4/9 plus A into A is going to be A square. This is one element, or you can say one first A 1 element, right? Next first row and second column से second element मिलेगा, तो ये क्या होगा, 2/9 plus 2/9 plus A into B, right? Then first row and third column करोगे तो 2/9 plus दिस इज माइनस साइन हियर, तो ये होगा माइनस, तो यहाँ पे होगा माइनस 4/9, 2/3 इंटू 2/3 तो 4/9 प्लस A इंटू C. नेक्स्ट रो क्या होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, so this is going to be 2/9 plus 2/9 plus A into B, then 4/9 plus 1/9 plus B square, and then this is going to be 4/9 minus 2/9 plus B into C. Then first third row and first column, 2/9 minus 4/9 plus A into C. Then 4/9 minus 2/9 plus B into C. And then 4/9, 2/3 into 2/3, 4/9, यहाँ पे minus into minus plus होगा, तो इस again going to be plus 4/9 plus C square. So this is a matrix on left hand side which we have equals to, equals to on the right hand side we have identity matrix, right? So now when we equate the left hand side and right hand side part, see which one will be the easier equations which we can equate. If you observe, first row में first element है a something plus a square equals to 1, which can be easier. अभी बाकी के अगर टर्म्स में देखोगे a into b मल्टीप्लाई मतलब दो टर्म्स आ रहे a and b, so it will get complicated while we evaluate how should we consider a, what is a and what is b, right? So in such case we will prefer which one is the easiest one equations. So if you observe in the whole matrix, जो भी diagonal elements है
जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, इजियर हो गए हमें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बाकी सारे में हमारे पास दो टर्म्स है ए सी बी इंटू सी एंड सो ऑन, राइट. सो preferable should be diagonal elements. Let's check. So if I consider the first element, diagonal element, ये क्या है, 1 by 9 plus 4 by 9. What is it? 1 by 9 plus 4 by 9 क्या होगा, ये होगा 5 by 9 plus a square equal to, on the right hand side what is the element at the same place, that is 1, right. So where we can write this is a square is equal to 1 minus 5 by 9. So 1 minus 9 5 by 9 क्या होगा, a square हो जाएगा 4 by 9. सो स्क्वायर की वैल्यू 4/9, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी +2/3, राइट. सिमिलरली सेकेंड डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 4/9 plus 1/9. सो अगेन and this is going to be 5/9 plus b square equals to 1. So we can write this as b square equals to 1 minus 5/9. So ये हो जाएगा b square equals to 4/9. Again when you take the square root, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें प्लस और माइनस 2/3. Similarly, the third diagonal element, now this is 4/9 plus 4/9, so this is going to be 8/9 plus c square equals to 1. So this implies c square is going to be 1 minus 8/9. 8 by 1 minus 8/9 मतलब 9 minus 8 is 1 going to 1. So ये हो जाए c square is equal to 1/9 and therefore c की वैल्यू मिल जाएगी plus or minus 1/3. So this is the required value a, b, c which we need for this given matrix which is orthogonal. तो एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई वेदर इट इज ऑर्थोगोनल, मतलब क्या करोगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे और मल्टीप्लाई करोगे और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं वो चेक करोगे. और दूसरा टाइप होता है जो ये हमने सॉल्व किया जहाँ पे ऑलरेडी बताया गया होता है कि ये ऑर्थोगोनल है, जो भी उसमें अननोन्स है वो फाइंड आउट करो. तो अगेन सेम रिलेशन इनटू ए ट्रांसफर इक्वल टू आइडेंटिटी यूज करोगे, बट जस्ट यहाँ पे इक्वेट करने होंगे वो इक्वेशंस करस्पॉन्डिंग टू फाइंड दैट अननोन्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड व्हाट इज orthogonal transformation. Linear transformation is very much helpful because obviously linear transformation ही हमें बताता है कि वो orthogonal है या नहीं. Linear transformation ही हमें help करेगा आगे थे टॉपिक में जहाँ पे हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये था आज के वीडियो के लिए आज का टॉपिक. अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए प्लीज 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 टू लाइक एंड शेयर माई channel, also subscribe and press that bell icon to get notified whenever I upload a new video. Thank you.